No, not at all. Not at all. If you were to take out the speech, the formal speech that circulated in the Niti Aayog meeting, you will find a categorical mention for return of statehood in that which was given to the Honorable Prime Minister and all the members of the Governing Council of the Niti Aayog. So the conversation around statehood has not stalled. The only thing I was unwilling to do was to use the special session of the Assembly to talk about statehood. But that doesn't mean the conversation has stopped. The conversation is ongoing. मरकज़ी हुकूमत को ज़रूर इसमें पहल करनी चाहिए. उनको अपने एजेंसियों का इस्तेमाल करके पता करना चाहिए कि कौन से लोग हैं, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने ये हमला नहीं किया. कश्मीर के लोगों ने यहाँ से टूरिस्टों को नहीं भगाया. ये हमला हमारी इजाज़त से या हमारे फ़ायदे के लिए नहीं हुआ. कश्मीर के लोगों ने एक आवाज़ में बाहर आके 22 तारीख के बाद कहा कि नॉट इन आवर नेम, हमारे नाम में नहीं, हम इस हमले के साथ नहीं हैं. उसके बाद भी अगर आप कश्मीर के लोगों को सज़ा दें और उनको बाइकआउट करने की बात करें तो मैं माफ़ी चाहता हूँ. खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का हमला हमें कभी दोबारा देखना पड़े, कौन आएगा ना उसकी मजम्मत करने के लिए. अगर मजम्मत करने के बाद भी हमें गुनहगार समझा जाता है तो फिर हम करें तो करें क्या. इसलिए मैं चाहता हूं कि मरकज़ी हुकूमत इस चीज़ को जो है नज़रअंदाज ना करें, वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके इसमें तहकीकात करके इस कैंपेन को रोकें. No, it's not that. It's not that. The fact is that security and law and order is not the responsibility of the elected government. Whose responsibility is it? The Lieutenant Governor. Therefore, clearly, there are three sets of sort of power centers that need to coordinate to ensure that things go smoothly here. I can promote tourism. I can create the infrastructure for tourism. I can ensure that the tourists come and have a good visit. But the security of the tourists currently resides within the powers of the Lieutenant Governor. And that is the point I made, that the union government, the elected government, and the set of government that is represented by Raj Bhavan, we need to work together to ensure that what happened on the 22nd of April doesn't happen again.